Welcome back to Govt Drish, and today it's Lucent series General Knowledge, that is part 34. We have completed almost 33 parts of the ancient history, modern history, medieval history, and now we are in our modern history last parts. There are few much more parts left, and then we will complete our modern history as well. So if you want to grab information about the other parts, go through our other videos where you will find detailed information regarding each and every topics, and as well as the highlighted points from where you have to just make up the questions. So let's get started with the Gandhian era, that was in 1917 to 47. First, what he did, it was in South Africa, that is this year. First, in 1893, there was departure of Gandhi to South Africa. Gandhiji went to South Africa, and then in this year he found Natal Indian Congress. Then he found Indian Ambulance Corps during the Boer Wars. Then foundation of Indian Opinion. Then Phoenix Farm, and it was near Durban. Then civil disobedience movement, that was satyagraha, that was against the Asiatic ordinance in Travancore. Then we have satyagraha against the compulsory registration and passes for Asians in Transvaal. That was also known as Black Act. Now 1908, there was trial and imprisonment in the Johannesburg jail, and it was his first jail term. And then we have 1910, there was foundation of Tolstoy farm, and it was near Johannesburg. Then we have 1913, that was satyagraha against the non-Christian marriages in Cape Town. 1914, he quit South Africa, and then he returns to India, and then he was awarded as the Hind, and he was named that because he had raised an Indian ambulance corps, which was during the Boer Wars. Boer Wars, and this was in South Africa. What were the developments on the chronological overview? Now, what happened in India from 1915 to 1948? First, he arrived in Bombay. Gandhiji Bombay आए 9th January 1915 को. फिर then he founded the Satyagraha Ashrama, that was in Kochara. Please go through all the points that I am marking, which is very important. According to the year, what was made, what had happened, everything is mentioned. Then he arrived at Bombay. Then the Satyagraha Ashrama, that was in Ahmedabad. Then ashrama, then it shifted at the banks of Sabarmati, and then he did an all India tour. Then 16, he was absent from active politics, but he had attended the Lucknow session of the INC, that was held in 26 December to 30 December, and in the year 1916. So what happened here? There was Rajkumar Shukla, who was a cultivator from Bihar, and he was the one who had requested him to come to Champaran. So there only the Champaran Satyagraha took place. 1917, there were cultivators, जो farmers थे, जो ग्रो करते थे कल्टिवेटर्स, उनको ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कि उनको इंडिगो ही उगाना चाहिए अपने लैंड में. और इंडिगो ऐसा एक प्लांट था जिसको अगर कोई ग्रो करता है अपने लैंड में, दैट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सो द सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल एनी मोर. तो उसके बाद क्या होता है, कुछ क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं. एंड देन what happened, there was his first civil disobedience movement. Then in 1918, he had launched the struggle in Ahmedabad also, and in Ahmedabad Satyagraha, there was about industrial workers. Then hunger strike किया गया, और ये जो वेपन था, हंगर स्ट्राइक का वेपन, ये फर्स्ट टाइम गांधी जी ने ही यूज़ किया था अपने अहमदाबाद स्ट्रगल के टाइम पे. और यहाँ पे इन लोगों ने जो खेरा सत्याग्रह, सो इट वॉज नॉट अहमदाबाद सत्याग्रह, बट ये वॉज खेरा सत्याग्रह इन गुजरात. तो उसमें जो जितने भी पेजेंट्स थे, जो जो रेंट था लैंड का, वो पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देयर वाज फेलियर ऑफ क्रॉप्स, मे बी ड्यू टू ड्राउट, maybe due to any other such unfertileness or any such natural consequences, they couldn't pay. So that time Gandhiji went there to protest, and this was also his first non-cooperation movement. So when was his first civil disobedience movement, in which year, and which year was his first non-cooperation movement? Remember that. And then Rawlett Act came in 1919, और फिर उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट का वो कॉल कर दिया.
देयर वाज पॉलिटिकल मूवमेंट्स, तब फिर के सारे गोल्ड मेडल जो गांधी जी को मिला था वो उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था तब, तो ही हैड रिटर्न। फिर खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्ट हुआ, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे उन लोगों ने गांधी जी को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया। फिर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, दोनों ही गांधी जी ने लीड किया, बट देन ही हैड कॉल्ड ऑफ दैट मूवमेंट, चौरी चौरा के बाद ही नहीं, चौरी चौरा में जहाँ पे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन बर्न कर दिया, तो ही थॉट दैट पीपल आर बिकमिंग वेरी वायलेंट, सो ही हैड कॉल्ड ऑफ, बट दिस वाज यूज्ड बाय गांधी जी ओनली। देन वी हैव बेलगाम सेशन ऑफ INC, जब पे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम के लिए गांधी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट के हिसाब से इलेक्ट किया गया। देन 25-27 उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया था। फिर उन लोगों ने बस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में कांग्रेस के डेवलपमेंट के लिए सोचना स्टार्ट कर दिया। फिर 2 साल के बाद ही 25 के बाद फिर से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन कर दिया, और फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, दांडी मार्च किया, सॉल्ट सत्याग्रह किया, मतलब सेम ही चीज़ है। देन सेकेंड राउंड पे कॉन्फ्रेंस अटेंड किया लंदन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। एंड देन 1934-39 उन्होंने फिर से रिटायरमेंट ले लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से 34 में सेवाग्राम, ओके, वृद्धाश्रम, लेकिन फिर से 39 में फिर से रिज्यूम किया, और इस बार उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्लोगन रेस किया, एंड देन डू और डाई, कि ठीक हमें ये करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश फ्री नहीं होगा, और वी विल कैन डाई ऑल्सो इन दिस अटेम्प्ट। फिर इसके बाद ही गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे 42-44। फिर उन्होंने अपने आगा खान पैलेस में अपना डिटेंशन दिया, जो डिटेंशन में थे, जो पुणे के पास है। फिर उन्होंने गांधी जी हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हिज वाइफ कस्तूरबा एंड प्राइवेट सेक्रेटरी दैट इज़ महादेव देसाई, एंड दिस वॉज गांधीज लास्ट विजिट। अब इसके बाद वो जेल में नहीं गए। फिर 1945 के बाद भी गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस था वो कांग्रेस में था। देन ही वॉज ऑल्सो वेरी मच डिस्ट्रेस, और बहुत ही दुखी थे कि इतना कम्युनल वायलेंस हो रहा था मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन कॉल के बाद। तो फिर वो नौखाली गए, और फिर वो कैलकाटा आ गए कि ठीक है आप कम्युनल पीस बंद कर, कम्युनल पीस हो, दे शुड नॉट बी एनी सच राइट्स एंड ऑल। Then he was also distressed by the Mountbatten plan, like partition plan. He didn't want partition. He was staying in Kolkata, like he was seeing that what sort of communal violence was happening. And then he returns to Delhi on September 1947. But फिर नथुराम गॉडसे जो थे मेंबर ऑफ RSS, उन्होंने गांधी जी को शॉट डेड किया जब वो एक इवनिंग प्रेयर मीटिंग में थे। कहाँ पे थे? बिरला हाउस में, न्यू दिल्ली में। So why he died? He said "Hey Ram" on his lips. So this is one of the info, and he had also suggested that जब हमें मिल जाएगा आज़ादी और इंडिपेंडेंस, तब इंटरनेशनल कांग्रेस को लोक सेवक समाज में कन्वर्ट कर देना, बट दैट डिडंट हैपन, इट इज स्टिल एन पॉलिटिकल पार्टी। So this was all about Gandhiji and his era, like in what year, in which year, every detail is given, like what he went through, where he went, what movements he had called on. Okay, so these are all the information, go through it, and this section is very important because this is not just for exam but for every general understanding. This chronological order is important for even our country's past as well. So go through it, frame questions out of it. If you have any doubt, comment down in our comment box section and we'll try to help you out. Till then, keep liking and sharing our videos and keep following us. Till then, take care, see you, meet in our next part with the Lucent series General Knowledge part 5 35. Take care.